हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारे पास आएगा वर्बल कम्युनिकेशन और सेकंड का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है गाइस, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एक वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। Verbal communication is when you convey the message from through words and sentence. This is called verbal communication. It is also a spoken language. Speech is very important tool to communicate with other human beings in spoken language. Now I start the second part, non-verbal communication. Non-verbal communication is that you convey the message from through signs and without saying words. This is called non-verbal communication. It is also a sign language. It is also done through gesture, emotions, movements, hairstyle, body types, etc. तो guys, आज हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के पास के बारे में, जो दो प्रकार के थे, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, और रोजाना हमारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू।